ऑलराइट जी, इस वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करने लगे हैं कि मटेरियल्स क्या होते हैं और उनको ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई कैसे करते हैं। आपको याद होगा हमने पिछले सेक्शंस में कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाए थे, कुछ स्फेयर्स बनाए थे, कुछ बॉक्सेस बनाए थे, कुछ सिलेंडर्स बनाए थे और उनकी कॉम्बिनेशन से एक ट्रैक्टर भी बनाया था, बट उनकी सरफेस सारी बिल्कुल ग्रे थी। अब हम देखते हैं कि उस ग्रे कलर ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई और कलर अगर अप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे। और उस पर हम एक सॉलिड कलर भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो कोई इमेज, कोई जेपीजी, कोई पीएनजी एज ए टेक्सचर भी अप्लाई कर सकते हैं। देखते हैं कि मटेरियल्स कैसे काम कर सकते हैं। मेरे पास यूनिटी का ये एक एम्प्टी प्रोजेक्ट है। इसमें आई विल प्रॉब्ली मेक अ फ्यू ऑब्जेक्ट्स। लेट्स क्रिएट अ क्यूब। इस क्यूब के पास लेट्स क्रिएट स्फेयर। इसको हम निकाल के थोड़ा सा साइड पे रख लेते हैं। इसी तरह यहाँ बनाते हैं हम एक कैप्सूल, और हम बनाते हैं एक सिलेंडर। प्लीज़ याद रखिएगा, सिलेंडर की टॉप और बॉटम सरफेस फ्लैट होती है और कैप्सूल इज स्फेरिकल ऑन द टॉप एंड बॉटम। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा फोल्डर है जहाँ पे हमारा सीन पड़ा हुआ है, यहाँ पे आई विल राइट क्लिक एंड क्रिएट अ मटेरियल। सो इस मेन्यू में से आई विल सेलेक्ट मटेरियल। एक नया मटेरियल हम बनाने लगे। इस मटेरियल, ये न्यू मटेरियल के नाम से आ गया, इसका मैं नाम रख लेता हूँ रेड। इस रेड मटेरियल को क्लिक करते ही दाएं जाने यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज आपको नजर आनी शुरू हो जाएंगी। सो इन प्रॉपर्टीज में हमने सेलेक्ट करना है ये अल्बेडो प्रॉपर्टी, जो कि वाइट नजर आ रही है। अगर मैं इस वाइट को क्लिक करूं तो आप देखेंगे कि एक ये कलर चूजर मेरे पास आ गया। इसमें से आई कैन प्रॉबली सेलेक्ट रेडिश टेंट, rather it's pretty much red. और इसी तरह I can create another material and I can call it blue, और इसका albedo हम कर देते हैं blue, something like this. and you can see कि ये इस सर्कल का इस मटेरियल के ऊपर एक मटेरियल आपको रेड कलर में बॉल नजर आ रही है, ब्लू कलर में बॉल नजर आ रही है बॉटम पे। इसी तरह आई विल राइट क्लिक, क्रिएट एक तीसरा मटेरियल। आई विल कॉल इट प्रॉबली येलो, और इस येलो के लिए भी हम यहाँ से कलर चूजर में से आई विल गो टू दिस सेक्शन टू मेक इट प्रीटी मच कंप्लीटली येलो। यू कैन ऑल्सो सेट अल्फा कि वो ट्रांसपेरेंट है कि नहीं। सो ये हमने 3 कलर्स अप्लाई किए। प्लीज नोट, अगर मैं रेड ड्रैग करके बॉक्स पे डाल दूँ तो आपका बॉक्स रेड हो गया। ब्लू ड्रैग करके मैं स्फेयर पे डालूं और येलो ड्रैग करके मैं सिलेंडर पे डालूं, या आई कुड प्रॉबली अनडू एंड ब्लू को हम कैप्सूल पे और येलो को सिलेंडर पे, बॉल पे मैं कॉटेक्स लगाते हैं। तो ये हमारी सूरत हाल है। आप ये भी देखेंगे कि अभी करंटली ये एक ही जैसा इनका प्रॉपर्टीज़ हैं। सो अगर मैं ब्लू की प्रॉपर्टीज़ में जाके इसकी स्मूथनेस थोड़ी ज़्यादा कर दूं तो यू कैन सी कि ये बड़ा शाइनी किस्म का ब्लू बन जाएगा। या अगर मैं येलो की प्रॉपर्टीज़ में जाके इसको ज़्यादा मेटालिक कर दूं तो यू विल सी कि ये प्रीटी मच इसकी प्रॉपर्टी से थोड़ा सा प्ले अराउंड करें तो यू विल सी दैट द येलो इज़ नॉट रियली येलो एनी मोर, इट्स मोर ऑफ अ गोल्डन मेटालिक टाइप थिंग। इसी तरह रेड इज़ स्टैंडर्ड। इसको रेड को भी हम, अगर हम चाहें तो इसके रेड के मटेरियल को भी हम मज़ीद मेटालिक कर सकते हैं। इसके अलावा वी कैन यूज़ अ जेपीजी, पीएनजी, और यहाँ तक कि फोटोशॉप के पीएसडी इमेज भी सपोर्टेड है यूनिटी में। हम किसी एक जेनेरिक इमेज को, एक पिक्चर को एज ए टेक्सचर यूज़ कर सकते हैं। उसका सबसे आसान तरीका ये है कि यहाँ फोल्डर में मेरे पास कुछ पिक्चर्स पड़ी हुई हैं। फॉर एग्जांपल ये एक फुटबॉल का सा स्किन है, जैसे आप ये मैंने कहीं इंटरनेट से ली है। प्लीज़ नोट कि जब भी आप कोई इमेजेस इंटरनेट से लें, मेक श्योर दैट वो कॉपीराइटेड इमेजेस ना हो, कोई इन्फ्रिंजमेंट आपके पास ना आए। कुछ घास का इमेज है। यहाँ तक कि आई कुड गो इनटू पेंट, और माइक्रोसॉफ्ट पेंट के अंदर आई कुड प्रॉबली ड्रॉ समथिंग। सो I can use maybe this orange color, and I can draw some lines in orange, and I can get a blue color, and I can draw some lines in blue, and then I can get some red and make some lines in red, and I will just save it as a pattern. I call it pattern.png. ये भी आप देखेंगे कि हमने इसी फोल्डर में सेव कर लिया, तो हमारा पैटर्न भी यहाँ पे है, ग्रास भी यहाँ पे है, फुटबॉल भी। मैं इन तीनों इमेजेस को आई विल ड्रैग देम ऑन टू माई यूनिटी। सो ये मेरी यूनिटी चल रही है और ये मेरा फोल्डर है।
इसमें से तीनों इमेजेस अगर मैं ड्रैग कर लूँ तो ये यहाँ पे मेरे मटेरियल्स के साथ फोल्डर में आ जाएंगे। ये तीनों इमेजेस मेरे पास है, फुटबॉल, ग्रास और पैटर्न। सो आई कैन लिटरली ड्रैग द पैटर्न onto my football, onto my ball sphere, and you can just come closer and see that my blue, orange and red lines are actually making a decent texture over here. वही इमेज है जो अभी हमने पेंट में ड्रॉ किया है। या अगर मैं चाहूँ तो फुटबॉल वाली इमेज को अगर इसके ऊपर ड्रॉप कर दूं तो यू कैन सी कि दिस बॉल इज pretty much looking like a football. Yeah, the lighting needs to be fixed a little, so I could probably rotate the light a little to make it look more. Yeah, so the shadows are pretty good. अब इसी मटेरियल को, यानी अब आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने फुटबॉल को ड्रैग किया, एक मटेरियल्स का फोल्डर बन गया और उसमें ये फुटबॉल का मटेरियल क्रिएट कर दिया इसने। सो योर इमेज हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अ मटेरियल। और अब आप इस मटेरियल की प्रॉपर्टीज में भी मेटालिक ऐड कर दें तो ये सिल्वर फुटबॉल बन गई, या स्मूथ कर दें तो बड़ी शाइनी फुटबॉल बन गई, लुक्स लाइक अ ग्लास फुटबॉल और समथिंग। So this is how you create textures in Unity. Just get the images into the folder. ये वही फोल्डर है जो हमने प्रोजेक्ट के लिए बनाया था। इस इमेज को जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे ड्रॉप कर देंगे तो उसका मटेरियल बन जाएगा। फॉर एग्जांपल ये जो हाथ से हमने पैटर्न बनाया था, ये मैं अगर इस बॉक्स के ऊपर डाल दूं तो यू कैन सी कि ये बॉक्स के ऊपर हमारा हैंड ड्रॉन टेक्सचर आना शुरू हो गया है। या अगर मैं वही रेड कलर वापस दोबारा उठा के बॉल पे डाल दूं तो अब वो फुटबॉल की बजाय रेड कलर की बॉल लग रही है। सो मटेरियल इन यूनिटी इज बेसिकली द स्किन आउटसाइड एन ऑब्जेक्ट, चाहे वो बेसिक ऑब्जेक्ट हो चाहे वो एडवांस ऑब्जेक्ट हो, उसकी सरफेस का कलर या उसका मटेरियल और उसकी प्रॉपर्टीज और उसकी शाइनीनेस। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं इस रेड मटेरियल को देखूं तो अब आप इसमें देखेंगे कि इसमें एक शेडर की ऑप्शन भी आ रही है। सो ये मेरी रेड बॉल है, इसका मटेरियल में अगर मैं शेडर चेंज कर दूं जो कि स्टैंडर्ड है अभी, इसको आई कुड प्रोबेबली चेंज टू समथिंग लाइक स्प्राइट्स डिफॉल्ट। सो दिस लुक्स लाइक अ ब्लैंड रेड कलर, और आई कैन चेंज इट टू नेचर, terrain, diffuse. So it lost a red color. Maybe I can say it GUI texture shader. So this is again blank. We were on the standard, so this looks pretty standard. इसमें usually mobile के case में you could use mobile diffuse to make it a little more. Oh, it's gone gray. What happened? So sphere has this material. I'm sorry, the red material has gone to mobile diffuse. It needs to go back to standard. Mobile diffuse will work better on the textures. For example, ये जो आपका hand drawn image है, I could change the material of this thing to mobile diffuse, and this will look simple, plain, less shaders, easier for mobile phones to draw. So basically your materials will allow you to make the objects colorful or apply textures onto the objects. That's all for this video. Let's move on to the next video.